See, we know that students, we all celebrate Diwali. Diwali is basically a festival of lights, isn't it? And we do a lot of things. We enjoy this day. And the most important that we like or enjoy is burning the crackers, isn't it? So burning of crackers is a combustion reaction. So all your activities like lighting the lamps, burning the crackers, they all involve the combustion reactions. And today in this particular video, we'll be studying more about this video lecture. So combustion. Combustion is a it's a chemical change. Chemical change means where a new substance is formed. So combustion is a chemical change where you burn a substance in the presence of oxygen. So suppose we have wood, or we can have coal. So when we burn wood and coal in the presence of oxygen, so this process will be called as combustion. So what is combustion? Burning the substance in the presence of oxygen. Okay, and whenever we are burning anything, whenever we are burning the wood or the coal or petrol or diesel, it will produce heat and light energy. Okay, what it will produce? It will produce heat and light energy. So it is basically a combustion reaction, and this will release, you can say, two energies. One is light, and along with this, heat energy is also produced. So what is combustion? Burning of any substance in the presence of oxygen is called as combustion, and the combustion reactions, they basically release lot of heat and light, and that is the reason why they are called as exothermic reactions. So your combustion reactions, they are your exothermic reactions, like burning of coal, burning of wood, burning of petrol, burning of diesel, burning of LPG. These are all your combustion reactions. Okay, और ये जो एनर्जी है बेटा, लाइट एनर्जी है जो combustion के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, दिस कैन बी रिलीज्ड ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. आपको हीट जो नज़र आ रही है, लाइट जो नज़र आ रही है, वो ग्लो की फॉर्म में हो सकती है, फ्लेम की फॉर्म में हो सकती है. जैसे सपोज करिए अगर हम लकड़ी को बर्न करते हैं तो वी गेट अ फ्लेम, लेकिन अगर हम कोल को बर्न करते हैं देन इन दैट केस वी गेट अ ग्लो. ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. Types of combustion reactions, or types of types of substances on the basis of combustion. देखिए दो तरीके के substance होते हैं वहाँ. First is the combustible substance, another is non-combustible substance. The substance that catches fire very easily in the presence of oxygen. कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से जलने लगती है, so that is called as your combustible substance. Like petrol, as you can see, burning of petrol is petrol is a combustible substance. LPG, natural gas, kerosene, hydrogen, wood, paper, coal, these are all your combustible substances that catch fire very easily. Non-combustible substances are the substances that do not burn or catch fire in the presence of oxygen. ये वो चीज़ें हैं बेटा जो बहुत आसानी से आग नहीं पकड़ती हैं. For example, your sand, rocks, watch glass, water, these are the, they do not catch fire very easily. Okay, now whenever the combustion process is taking place, बेटे देखिए जब भी combustion reaction होता है, combustion process होता है, तो there are some necessities for this reaction to occur. The very first is that we need to have a combustible substance. यानी हमारे पास सबसे पहले तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हमें बर्न करना है, जो बर्न हो सकता है. Secondly, we require the substance which will support burning. That is called as supporter of combustion. And if you remember, that is oxygen, because oxygen supports burning. यहाँ पर जिस substance की हम बात कर रहे हैं वो oxygen है. And secondly, पहले हमें उस substance को हीट करना पड़ेगा जिससे कि उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाए. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली ये वो टेम्परेचर होता है बेटा
जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो it starts burning. Okay, so the temperature at which a substance burns, that is called as its ignition temperature. तो first हमें एक combustible substance चाहिए जिसको हमें burn करना है. Secondly, we require oxygen, and third, we require that substance should reach the ignition temperature. Only then it will start burning. ठीक है? तो हमारे पास ये 3 चीज़ें important है. Is this clear? So जो चीज़ें हमारे कंबर्शन को सपोर्ट करती हैं वो आपकी सपोर्टर ऑफ कंबर्शन है, जिसमें मेन आपकी ऑक्सीजन है. अदर देन दिस देयर आर सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट सपोर्ट कंबर्शन. दे आर रेफर्ड टू एज नॉन सपोर्टर्स ऑफ कंबर्शन, लाइक योर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, ऑल दीज गैसेस दे एक्ट एज नॉन सपोर्टर्स ऑफ कंबर्शन. नाउ लेट्स टेक एन एक्टिविटी. First of all, you take a wooden block. Okay, over the wooden block you place a burning candle. ठीक है, हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है, उसके ऊपर हमने एक बर्निंग कैंडल को रखा है, एंड वी आर कवरिंग दिस कैंडल विद अ ग्लास टॉप, बट इट इज़ ओपन फ्रॉम द अपर साइड. यहाँ से जो आपका ग्लास टॉप है, जो आपका ग्लास जार है, वो आपका ओपन है. सो कॉन्टिन्यूसली यू विल फाइंड दैट दिस कैंडल विल बर्न बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग इट इज़ गेटिंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन. नाउ इन दिस सेकेंड पिक्चर यू कैन सी वी हैव कवर्ड इट विद अ लिड. हमने क्या किया, जो ऊपर का ग्लास जार का ओपन हिस्सा था बेटा, वी हैव कवर्ड इट विद जार. सो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग. Why do you think the candle will stop burning? Yes, Charita? Exactly. Because now the candle is not getting oxygen. Okay, the candle is not getting oxygen and oxygen supports burning. तो जो हमारी कैंडल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसीलिए इट विल स्टॉप बर्निंग. सो ऑक्सीजन, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी हैव कंक्लूडेड दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कैंडल बर्न करती रहे, सो वी दिस बर्निंग ऑफ एनीथिंग, नॉट इवन कैंडल, एनीथिंग विल रिक्वायर ऑक्सीजन. Now let's come to the another activity. Suppose we have a paper cup. Okay बेटे, हमारे पास एक पेपर कप है. Now you heat this paper cup. इस पेपर कप को आप हीट करिए. Suppose you have a candle and you start heating it. So you will observe that this paper cup will burn easily. अगर हमारे पास पेपर कप है और हम कैंडल उसके नीचे रख देते हैं, तो ये पेपर कप जो है बहुत आसानी से it will catch fire and it will burn. Okay. Now in second case, what do? You take the paper cup and fill it with water. इसमें water add कर दीजिए बेटे. So we've added water into the paper cup. Now try burning it. What will you observe? Tell me, any idea what you'll observe? Whether the paper cup will burn or not? Dear students, the paper will not burn. Why? Because the paper is containing a lot of water. So now whatever heat you are supplying, whatever energy you are supplying, this water will absorb this energy. ठीक है, तो आपका पानी गर्म हो जाएगा लेकिन आपका पेपर कप बर्न नहीं होगा, because the heat that we are supplying is used or is taken by the water. It is being absorbed by the water. So paper cup will remain safe. Okay. Now in this case the water does not allow the paper to reach its ignition temperature. तो second case में हमारा water जो है वो paper cup को ignition temperature reach करने ही नहीं देता है. Is this clear? Okay. So every substance, हर चीज़ का अपना ignition temperature होता है. Every substance has its ignition temperature, but there are certain substances बेटा that can catch fire very easily. This means they have a very low ignition temperature. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ignition temperature काफ़ी low होता है. ऐसे substances को हम कहते हैं inflammable substances, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं. बहुत जल्दी, अगर if you keep them very close to the fire, they'll catch fire very immediately. For example, like alcohol, petrol, isn't it? Sodium when kept in the air automatically catches fire. So ऐसे substances जो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं inflammable substances. Okay, understood? Okay, what is inflammable substance? That has a substance that catches fire very easily and it has a
low ignition temperature. Okay, so today's homework, first of all, you will make notes of this topic. You will complete the question answers related to this topic, and you will read the page numbers 83 to 85. Okay, dear students? And if there is any doubt, any query, you will respond back to me. Okay?